105, and this week our aim is Psalm number till reaching Psalm number 120. I hope we will reach even 130, and I have uploaded notes till Psalm number 150. Psalm number 150 तक पूरा background study का notes है, and after that these three will give you a brief or a detailed outline of Psalms. These three PDF. And I'm going to make it as a textbook, so we can use it as one PDF. So if you open these three PDF, you will find out the conclusion part, then small introduction like summary of till Psalm number 150. How many types of Psalms are there? What are the important themes? And who all are the authors? A short summary. So today we are going to start from Psalm number 105, and the heading goes like this: Tell of all his wonderful works. The Psalm number 105 is a historical psalm that recounts the mighty acts of God on behalf of Israel. It serves as a poetical retelling of the covenantal faithfulness of God from the time of Abraham to settlement of Israel in the promised land. So Psalm number 105 is a summarized, or it will give the details of all the historical events that is starting from Abraham till the people of Israel settled in the land of Canaan. अब्राहम से लेकर कनान का वाचा के देश में वो लोग आकर बसा करने का समय तक जितना बातें हुआ, सारी बातें साम नंबर 105 हमको क्या देता है, उसके बारे में समाचार देता है. सो फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 16, खोलिए, ओपन फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 16. Sixteen verse 8 onwards, if you read, you will find out Psalm number 105. पहला इतिहास अध्याय 16 का 8 से लेकर पढ़ के देखिए. वहां लिखने का तरीका भी स्टाइल अलग है आपका बाइबल में. सो पहला वचन पढ़ के, वहां तीसरा वचन पढ़ के देखिए. Oh, give thanks to the Lord, call upon his name, make known his deeds among the peoples. Read Psalm number 105 verse 1. Is it same or different? Same or different? Sure. So Psalm number 105 is equal to First Chronicle chapter 16 verse 3 onwards. समझ आया नहीं आया? पहले दिया 16 क्यों पढ़ने के लिए बोला. सो साम नंबर 105 में अब्राहम से लेकर वाचा का देश में लोग आकर बसा करने का समय तक, all the details from starting from Abraham till they settled in the land of Canaan, all these historical evidences are there in Psalm number 105, but we don't know who is the author because there is no heading in superscription, also did not mention who is the author. So Psalm number 105 is a part of fourth division of Psalms. Psalms में चौथा डिवीजन में Psalm number 105 आता है. The Psalms historical narrative aligns closely with the events recorded in Genesis and Exodus. उत्पत्ति की किताब में, निर्गमन की किताब में कुछ बातें और ऐतिहासिक बातें लिखा है. All these historical evidences which is recorded in Genesis till Exodus is available in Psalm number 105. In a nutshell, from the story of Abraham till they settled in the land of Canaan, all these details are summarized in Psalm number 105, and you will find that in First Chronicle chapter 3 verse chapter 16 verse 3 onwards. समझ आया? The authorship of Psalm number 105 is traditionally attributed to David. First Chronicle 16 chapter 8 to 22. Context क्या है वहां? Why there is a
worship or why they are singing song. So let's open and see. First Chronicle chapter 15 देखिए. First Chronicle chapter 15, the ark brought to Jerusalem. वाचा का संदूक यरूशलेम में वापस लेके आया. उसका I am not going to explain about the historical events again because you know. वाचा का संदूक लेके आने के समय क्या क्या हुआ था, कौन मर गया, उसके बाद क्या हुआ. You already know who died and what all the things happened. Coming to chapter 16, they kept the ark of the covenant in the temple and there is a celebration. आर्क ऑफ द कवेनेंट को, वाचा के संदेश को मंदिर के अंदर रखने के बाद एक बहुत बड़ा त्योहार जैसा एक आराधना, एक बड़ा अच्छा एक बड़ा सेलिब्रेशन है. एट द टाइम साम नंबर 105 यू विल फाइंड फर्स्ट क्रॉनिकल पहला इतिहास अध्याय 16 का 3 से लेकर. दैट्स व्हाई इट इज अट्रिब्यूटेड टू किंग डेविड. सो हु इज द ऑथर? Who is the author? And what is the context of Psalm number 105? Celebration. Why? Because the Ark of the Covenant brought back to Jerusalem. वाचा का संदूक वापस यरूशलेम में लेकर आया. Till this point you understood? So Psalm number 105 verse by verse division 1 to 7, a call to praise and remember. एक बुलाहट है स्तुति करने के लिए और पुराना बातों को याद करने के लिए. बुलाहट है स्तुति करने के लिए, a call to praise and remember. Remember what? The deeds of God. पहला वचन में लिखा है. माइकल मेरा पानी का बोतल वो लेके. So verses 1 to 7, a call to praise and remember the deeds of God. 8 to 15, covenant with patriarch. पिताओं से परमेश्वर ने जो वाचा बांधा था उसको याद दिलाता है. पिताओं से परमेश्वर ने जो वाचा बांधा था, covenant with patriarchs. So it starts from Abraham. So Psalm number 105, अब्राहम से लेकर कनान के देश में ये लोग आकर सेटलमेंट होने का समय तक, till they settle in the land of Canaan, it records everything and it remembers or it reminds what was the covenant God made with Abraham. That is written in verse 11. वचन 11 में लिखा है अब्राहम से परमेश्वर ने क्या वाचा बांधा था. What was the agreement that God made with Abraham? It is written in verse 11. Somebody please read. Saying to you, I will give the land of Canaan as your portion for uninhabited. So this was the covenant that God made with Abraham and that is fulfilled. And here this is a song of praise and a call to remember the acts of God. Point number 3, 16 to 22, Joseph's story and God's providence. यूसुफ की कहानी लिखा है, परमेश्वर उनके लिए क्या क्या किया. The story of Joseph and providence that he got from God, that is verses 16 to 22. So yesterday Deepak preached from Psalm number 46. So keep this in your mind. We covered till 105. So whenever you preach, we have to bring all the details. Yesterday you gave only you read some verses and you gave the outside explanation, which means oh karna ye karna aisa hona karke. You did not mention the context, history and nothing. So keep this in your mind, and while you are writing in your sermon notebook, write if the preacher did mention this or not. Why? Because we are studying one by one till 150. The reason is, once you get back to your mission field or anywhere, when you get time to preach from Psalms, you should not preach like a normal pastor is preaching. How a normal pastor will preach? He will take a verse and he will just explain everything and he will sit. So we should make a difference. That is the main aim. Okay, Deepak. So verses 23 to 25, Israel's sojourn in Egypt. ऐगुप्त देश में इस्राएल लोग कैसा बढ़ते गया और कैसा जी रहा था, पहले वाला कहानी.
उसके बारे में समझाता है, वर्सेस 23 to 25। Verses 26 to 38, the Exodus and God's mighty acts, निर्गमन की कहानी और उन लोगों का सफर में परमेश्वर ने क्या क्या महाकार्य किया उसके बारे में समझाता है। कौन सी वचन? 26 से लेकर 38। From 26 to 38, it gives the explanation of Exodus events and God's mighty acts in the midst of the Exodus event. Last 39 to 45, a journey to promised land, वाचा का देश तक उनका सफर कैसे हुआ इसकी सारांश देता है। A journey to promised land. So Psalm number 105 is divided into 6 different parts, starting from Abraham to the land of entering into the land of Canaan. It uses parallelism, एक समान दिखाने देने वाला वचन, repetition, remember, covenant and promise. These 3 words are repeated in Psalm number 105. Remember, covenant and promise. Remember, covenant and promise is repeated in Psalm number 105. Imagery. Some imagery, रूपक. Imagery रूपक ही है ना? Historical allusion. Historical allusion means it takes all historical evidences and it is making an allusion there. It is kind of a summary, khichdi jaisa. It takes all kind of events from Genesis, from the time of Abraham to the promised land. It did not mention every point, but it makes some allusion so that the reader can understand this thing happened at this point of time. ये बातें इस समय में हुआ था करके हमको समझ आने के लिए ऐतिहासिक बातों को लेकर छोटी शब्दों में लिख के रखा है। Didactic tune, which means kind of a teaching. So this Psalm number 105 is a teaching. It has the tune of teaching. कुछ बातें सिखाने का ट्यूनिंग वाला है। I think yesterday I sent one photo in the group. How many of you saw that? मैं बीच बीच में भेजता रहता हूँ, कितना लोग उसको देखता है? Every message is a sermon with photo. In the उसका फोटो का अंदर पॉइंट लिखा है, sermon में क्या क्या बोलना है। How many of you at least download and keep those things? The reason I am sending, you should not say, sir, I did not prepare. At least वो वचन देकर पॉइंट पढ़ा तो इस कहानी ये है, वो कहानी हम इधर हर एक अध्याय से पढ़ के गए थे पुराने नियम का। तो वहां मैंने बोला था ये टीचर इज नॉट ए प्रीचर, वही मैंने लास्ट में भेजा था शायद, वही होगा ना? ये टीचर इज नॉट ए प्रीचर करके एक मैंने भेजा था, कितने लोग देखा? समझ नहीं आया। नहीं, ये इसका ही है, कुछ अलग बात है तो नहीं है। Why? Because a preacher is not a teacher का तो एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ इसलिए। In which group I say? No, I usually send in all groups. A preacher and a pastor are not the same. ये वाला, a preacher and a pastor are not the same. How many of you read that? Why? Because pastor has some other functions to do. Pastor को और गहराई से और कुछ काम है. So when Bebe made this sentence while you were preaching, I did not prepare. I thought to write down those points because I already said, but you covered it by saying, but after the sermon, after the meeting, you went and you prepared. You said that. So कभी ये मैं बोलते रहता हूँ क्योंकि वो हमारा टीचर हमको सिखाया था, after going to the stage, कभी नहीं बोलना मैंने तैयारी नहीं की, ऐसे ही आया हूँ, लेकिन बहुत रात मैंने दिखाया।
Most of the time preachers will make this sentence. Why? Because we did not prepare. And the listener, हमारे जैसे लोग वहां बैठकर क्या बोलेगा, तैयारी नहीं किया तो फिर क्यों आया? If you not prepare, then why you are standing here? Without preparation, you can't preach, isn't it? So when it comes to Psalm number 105, it has two tunings. First one, remembering and worshipping and praising God, but the other sense, it has the didactic tune, teaching. Why the author is asking everyone to remember all these historical evidence? क्यों इतना सारी बातें अब्राहम से लेकर वाचा का देश तक इतना बातें हुआ, क्यों याद करने के लिए बोल रहा है? सिर्फ स्तुति करने के लिए नहीं. He is teaching the people, our forefathers, God made a covenant with our forefathers and he fulfilled it. And many times we did not fulfill our promises. हमारा promises जो परमेश्वर से वादा था वो पूरा नहीं. That's why he is saying, remember all the wondrous deeds. I think Sharon sir spoke from this point. Whenever we say the wondrous works of God, चमत्कार ही याद आएगा. We will think about the miraculous works of God. No, it has the other side. दूसरा साइड क्या है? When the people of God did not obey him, he did wondrous works. क्या क्या किया था? विपत्तियों को भेजा था, वो भी that also wondrous works only. मतलब every point has two aspects, and most of the time the preachers will preach परमेश्वर वहां कार्य करेगा करके बोलकर कौन सा कार्य के बारे में बताएगा? मन्ना गिराने के बात है. ओ the second side of those points are महाकार्य का और ऐसा वाला बातों का. इधर लिखा है ना वचन नंबर 1 में, make known his deeds among the peoples, exclamation mark. आपका बाइबल में देखिए, make known his deeds among the people. So when you preach, you can take his deeds and you can make a sermon. What are the deeds that he did during from Abraham to the land of Canaan? Not only blessing, he even punished his own people. You can read that. Read verse 33. 105 का 33 पढ़ के देखिए. It is not only blessing he did for his people, he even did something more. 33 में क्या लिखा? It is that 33 speaks about blessings or any punishment. So as a preacher or as a teacher or as a preacher, when you preach, not only the words of soothing मतलब लोगों का हृदय को ठंडा करने वाला बातें नहीं. His deeds has 2 points to speak. When the people obey, God bless them. When people disobeyed, God even punished them. So 2 aspects are there. So coming to the verse division done. Theological themes part. Point number 1, covenant faithfulness. Point number 1, covenant faithfulness. परमेश्वर एक वाचा बांधा था, उस पर परमेश्वर विश्वासी योगी बना. दैट इज वर्स 8, वचन 8 में उसका मीनिंग क्या है आपको समझ आएगा. अगर हम भूल गया तो इवन इफ वी फॉरगेट द कवेनेंट विद गॉड मेड, ही विल नेवर फॉरगेट. दैट इज देयर इन वर्स 8 वचन में लिखा है. डिवाइन सोवर्निटी एंड प्रोविडेंस. सोवर्निटी का हिंदी क्या था? प्रभु था, वही था ना. प्रोविडेंस मतलब परमेश्वर से हमको जो बातें मिलते रहता है, परमेश्वर देते रहता है, वो वाला बात है. डिवाइन सोवर्निटी एंड प्रोविडेंस, परमेश्वर उनका प्रभुता में, उनका अधिकार में हमको क्या क्या दिया, इसके बारे में हमको दिखाता है. साल्वेशन एंड डिलीवरेंस, एक्सोडस इवेंट्स को याद दिलाता है. साल्वेशन एंड डिलीवरेंस, उद्धार और डिलीवरेंस का हिंदी बचाव, छुटकारा. वर्स 4, रिमेम्बरेंस एंड टेस्टिमनी. कुछ बातें याद रखने का है, वो बातें क्या है? परमेश्वर का गवाही. Point number 5, all these things we are doing
फॉर यूनिवर्सल विटनेस। यूनिवर्सल विटनेस मतलब सारे जातियों में, सारे देशों में उनके गवाह बनने के लिए हम परमेश्वर का महाकार्यों को याद रखना है। रिमेंबर, वी हैव टू रिमेंबर ऑल द वंडरस वर्क्स ऑफ गॉड इन ऑर्डर टू बिकम ए विटनेस, यूनिवर्सल विटनेस ऑन दिस अर्थ। दैट इज रिटन इन वर्स नंबर 1, वचन 1 में लिखा है। शंभू क्या हुआ? You can compare Psalm number 105 with 106. Both have same theme, remembering the wondrous works of God. परमेश्वर का महा अद्भुत कार्यों को याद रखना। 105 and 106 both have same theme. So the historical events I told, starting from Abraham till the conquest of Canaan, all these things are written, all these things are summarized in Psalm number 105. So in that you have famine, akal, vipatti, plagues. परमेश्वर deliver किया उन लोगों को. So all these things are very clearly mentioned in Psalm number 105. And monotheism. What is meant by monotheism? Believing in one God. Why this is here? Because सफर के समय में उन लोगों के लिए 10 आज्ञाओं को दिया था. It says about there is only one true God. So in between they created some other gods, so they got the punishment also. So Jewish people use this psalm in a public worship, especially during the time of Passover. What is meant by Passover? लाल समुद्र से पास ओवर. Passover means Passover remembrance. Passover in a direct or indirect way, it points to which event that happened in Old Testament. Passover, उसमें ही उसका शब्द में ही उसका मीनिंग लिखा है. हाँ? नहीं, पास ओवर करके शब्द से कौन सा ऐतिहासिक बातें याद आता है? विच हिस्टोरिकल एविडेंस वी गेट फ्रॉम द टाइटल पास ओवर? पास ओवर का हिंदी क्या है? सो ऐगुप्त देश से परमेश्वर उनको बचाकर लाल समुद्र को पार कर कर उस तरफ लेके गया. पास ओवर, उनके पीछे लोग आया था, वो भी खत्म हो गया. सो इट रिमेम्बरेंस और इट पॉइंट्स when we go through same kind of context, we have to remember the wondrous works of God that He done for us. Why? Because they experienced that great miracle in their life, and उसके बाद कहाँ जाकर फिर संदेह किया, कहाँ जाकर from which point again they doubted, फिर पानी के वहां जाकर again they started doubting God. So this is a psalm of praise. Praise means Hallel, Hallel, Hallelujah का Hallel. This is a psalm of praise. So here you will find the role of Joseph in the narrative. Verses 16 to 22 पढ़ के देखिए. It also includes very detailed description about Joseph and his life. 16 से लेकर है. Yeah, from 15 also you can see. Theological significance from all these evidences, from Joseph or Abraham, Isaac, Jacob, from all these names and all the historical evidences, there are some theological significances. Faith in divine providence, परमेश्वर पर हमारा विश्वास के बारे में, परमेश्वर का महाकार्यों को क्यों याद रखना है, उसका मूल्य क्या है, why we should remember the important the great works of God, that also there in Psalm number 105. Then covenantal identity, we have an identity that is made with a covenant that was made with our patriarchs. हमारा पिताओं से एक वाचा बंधा था, वो हमारा पहचान है.
universal mission, that is in verse 1. यूनिवर्सल मिशन, ये जो सेवकाई साम नंबर 105 में बताया है, the mission motto that is there in Psalm number 105, that is a universal aspect, that is for everyone. Everyone should remember the wondrous works of God, and they have to become a universal witness to the end of this earth. समझ आया? So what will be the application that we can give for this psalm? From my side, I will give one application. As a Christian, it is very important to remember two aspects of God's wondrous works. परमेश्वर का महाकार्यों का दो बात में याद रखने का जरूरत है एक मसीह होने के नाते. वो पहला पॉइंट नंबर 1, I should not remember only the blessings of God from the history. I should remember even the punishment that God gave to His own people. ये मेरी तरफ से एक एप्लीकेशन है from Psalm number 105. That's why the author says, remember His wondrous deeds. समझ आया मैंने कौन सा एप्लीकेशन दिया? परमेश्वर का महाकार्य के बारे में बोलने का समय परमेश्वर इतिहास में किए हुए सिर्फ उपकारों को याद रखना का नहीं, उन्होंने क्या दंड भी दिया था हम याद रखना भी है, लोगों को समझाना भी है. अदरवाइज पीपल विल ऑलवेज थिंक मैं ठीक हूं, अभी सिर्फ आशीर्वाद का ही बात है, वही सोचेगा ना. एनी डाउट फ्रॉम साम नंबर 105? हर्ष, क्लिक.